Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the forces which are experienced by a charged particle, which are in nature magnetic field and electric field. We have already studied these two forces separately on the charged particle. For example, if there are two plates, one plate having positive charge and other plate has negative charge. When we put any negative charge near the negative plate, it will experience forces from two sides. From this negative plate, it experiences a repulsive force, and from this positive plate, it experiences an attractive force. Hence, it experiences a force which is accelerating in nature. In first case, its velocity become this little bit, but in this second moment, its velocity will increase. It means in this case, this electron can gain energy, kinetic energy. But when we put the electron near to positive charge plate, then it cannot move by itself towards the negative plate. We have to supply the energy initially to electron to move from positive to negative. In this case, if we provide energy to this electron in toward the negative direction, then this particle gradually decreases its velocity or kinetic energy or its momentum. Means in these both cases, electron either get the energy or lost the energy. This kind of force is known as electric force. It is experienced by the electron positive or negative particle. Another force on the charged particle will be when it is moving through a magnetic field. This crossed field is indicating that the magnetic field is inside the board. Now, in this case, if we project a proton particle, a positive charge particle, and also we know that when a charge is in motion, it creates a magnetic field around it in the form of concentric circles. It means this moving charge also bearing a magnetic field around it. When this magnetic field carrier particle enters in a magnetic field in any angle, then it will experiences a deflecting force according to a right-hand rule. In this kind of right-hand rule, the stretched fingers indicates the magnetic field and the thumb indicates the direction of motion, and the force is represented by this pen, which one is in upward direction always. At this moment, the magnetic force is upward, but at this moment, the magnetic force is in this direction. So this force is magnetic field in nature. So we can say the electric force is simply accelerating force, and this force is deflecting force. दोनों केसेस में एक्सेलरेशन तो पैदा हो रही है. Here just linear acceleration, but in this case the deflecting acceleration which can behave as a centripetal force. अच्छा, अगर हम ये दोनों fields एक ही जगह पर अप्लाई कर लें, for example we take two fields, one is electric field and other is magnetic field. Both are parallel. Magnetic field is in the direction of electric field. What happens when we throw a charged particle with velocity v in this direction? It means in this case E is parallel to B is parallel to V. What happened in this case? We have already studied that magnetic force is in nature mathematically represented by F is equal to Q V cross B. So this force is equal to Q V B sine theta. It means this force is maximum when theta is 90 degree, but this force is minimum, means 0, when the angle is 0. So in this case, V and B both are
parallel, it means angle is 0. So there is magnetic field, magnetic force is 0. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं in this case magnetic force is 0. अच्छा, then what happened with E, electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी फोर्स यहाँ पर लगाएगी, एक्सीलरेटिंग, डेसिलरेटिंग? तो हम पहले डिसाइड कर ले व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इन बाय दिस एरो वी आर इंडिकेटिंग दैट दिस साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड इज नेगेटिव. इट मींस दिस चार्ज पार्टिकल इफ इज पॉजिटिव देन it is accelerating in this direction. So this force is in nature introducing or producing the energy in this charge particle. So we can say Fe is equal to QE, E for electric field. Achha, in this case this particle just experiences a force which is in nature electrostatic, magnetic force is 0. But what happened when we are writing it as when E is perpendicular to B is perpendicular to V? It means these three vectors are perpendicular to each other. For example, यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होती है, इनवर्ट द मैग्नेटिक फील्ड या इनवर्ट द बोर्ड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर ले रहे हैं, और एक दूसरी हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास ये है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड के जो एरोज हैं, आई हैव ड्रॉन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. इट मींस there is a negative side of a electric field and there is a positive part. So what happens when an electron particle enters in this case, or proton enters in this case? In this case, when proton enters, this proton when enters in a magnetic field, just we are studying separately electric force and magnetic force. In this case, if this particle just experiences a magnetic force, then in which direction it will deflect? For example, we are taking right hand rule. So first fingers are erected in the direction of magnetic field toward the board, and the velocity of the particle is in the direction of thumb. Then the force should be upward. So this force can produce a magnetic field which is deflecting in nature but in upward direction. So we are writing here Fm is equal to QVB sine theta. And what happens when just electric field is acting on it? If electric field is acting on it, the positive charged particle, then this positive side deflect the positive charged particle in downward direction. It means if just electric field is inside, then it experiences downward force. Fe is equal to QE. Now, if these two forces are equal and opposite to each other, it means we write it here is if E is equal to FB, Fm, or if E minus Fm is equal to 0, then Fe is equal to Fm. If the magnetic force is deflecting the positive charge upward, similarly the electric field is deflecting the positive charge in downward equally, then the summation of these two forces is equal to 0, or we can say in magnitude Fe is equal to Fm, or we are writing it is Fe means QE and Fm is equal to QVB, or we are cancelling the term Q and the V is equal to E cross B.
It means whenever the charged particle has velocity e upon b, then it can move undeflectingly in a straight direction. It means these two forces are cancelling each other and the positive charged particle move in a straight direction, means without any force these two forces cancel by each other. We have discussed just two cases in separate direction, separate way. First we discuss the case when these two vectors are parallel to each other. Second case is when these three vectors are perpendicular to each other. अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक और बात भी याद आपको करनी है कि मैंने ये जो अभी केस लिखा है उसमें लिखा है कि Fe माइनस Fm इज इक्वल टू 0. ये कभी कभी होता है. F अगर ये बराबर ना हो तो क्या होगा वो भी हमें पढ़ना होगा. ये जो हम फोर्सेस पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी, इन चीजों को हम नाम देते हैं लोरेंट्ज फोर्स. लोरेंट्ज फोर्स एक्चुअली क्या है? व्हेन द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली प्रोजेक्टेड through the two fields, electric field and magnetic field, then the charged particle will experience the electric field and also magnetic field. Their summation could be, if these two forces are in same direction, then we can write this equation as F is equal to Fe plus Fm. Fe is given by QE and Fm is represented by QV cross B. If we find their summation, then we can get the result. F is equal to, we are taking Q as common and from these two terms, then Q is a common. Remaining answer in bracket remain is E plus bracket V cross B. This whole phenomena means ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन को हम नाम दे रहे हैं लोरेंट्ज फोर्स इक्वेशन. ये जो लोरेंट्ज फोर्स इक्वेशन हमारे पास आ रही है उसका समीशन तो ये होगा, लेकिन उसके जो स्पेशल केसेस हैं वो भी हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं. अच्छा, अब एक और केस आ रहा है कि अगर Fe is not equal to Fm, ये हमारे पास थर्ड केस होगा. अगर ये इस तरह से नहीं है तो फिर क्या होगा? यहाँ पर एनर्जी पार्टिकल गेन कर रहा है. इसका मकसद है पहले केस में जब ये पैरेलल है, एंगल 0 है, तो उस वक्त हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, मोमेंटम बढ़ेगा, ये सब के सब फैक्टर्स चेंज होंगे. और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं. यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रही, कोई भी फोर्स नहीं लग रही, कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगी, ना ही कोई काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम या वेलोसिटी में चेंज आएगी, ना ही डिफ्लेक्शन पैदा होगी. लेकिन अगर हमारे पास एक थर्ड केस जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है हम यहाँ पर थर्ड केस जो लिख रहे हैं उसमें लिख रहे हैं Fe is not equal to Fm. देन अगर कुछ इस तरह से कंडीशन बन रही है कि जो इसकी वेलोसिटी है पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल की, वो ऐसे नहीं है, v इज इक्वल टू ई अपॉन बी के बराबर नहीं है, और दोनों हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड है बोथ एट अ टाइम अवेलेबल है लेकिन बराबर नहीं है परपेंडिकुलर, लेकिन दे आर नॉट इक्वल वेलोसिटी इन दिस रेशियो. सो द चार्ज पार्टिकल एंटरिंग इन this field will move just like a spiral helical path. ये जो हेलिकल पाथ आ रहा है इस पे दोनों फोर्सेस लग रही हैं. यहाँ पर पार्टिकल डिफ्लेक्शन भी फील कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी आ रही है इसके ऊपर और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही है. तो अब ये जो स्पाइरल आ रहा है, हेलिकल पाथ में पार्टिकल आ रहा है, मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, तो वो ये इस वजह से. यहाँ पर जो V क्रॉस B है वो सिर्फ अगर मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस होती तो ये पार्टिकल एक सर्किल में रिवॉल्व होता. लेकिन यहाँ पर एक और केस भी है कि यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है. तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो बढ़ती जाएगी तो ये फोर्स का जो वैल्यू है वो भी बढ़ता जाएगा और ये स्पाइरली काइनेटिक एनर्जी भी अपनी इंक्रीज करता जाएगा और पार्टिकल जो है वो इस तरह से भी मूव करता जाएगा. इसका मकसद है
कि हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं लोरेंट्स फोर्स में कि जब ये तीनों पैरेलल हैं तो जस्ट इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स, और यहाँ पर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और कंडीशन हमारे पास है कि Fe इज इक्वल टू Fn, तो यहाँ पर अनडिफ्लेक्टिंग पार्टिकल जाएगा। और इस इक्वेशन को अगर ये आ रही है, इक्वेशन सही वैलिड हो रही है, तो हम इसको नाम देते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड। अच्छा, वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड का मकसद ये है कि जब भी वेलोसिटी E अपॉन B के बराबर होगी उस वक्त हम ये कहेंगे कि जो पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टिंग जाएगा। लेकिन अगर V इज इक्वल टू E अपॉन B के बराबर नहीं आ रही तो पार्टिकल जो है वो स्पाइरली एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पर दोनों फोर्सेस जो हैं वो इस पार्टिकल पर एग्जर्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर ये जो फोर्स थी हमारी मतलब समेशन थी इलेक्ट्रिक फोर्स की और मैग्नेटिक फोर्स की, ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये हम साइक्लोट्रॉन में लगाते हैं, वहां पर जो पार्टिकल मूव करेगा वो कुछ इस तरह से होगा। आज के लिए इतना ही है, और अभी जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा वो हमारे पास होगा चार्ज टू मास रेशो के लिए, इंशाल्लाह ताला वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा।